हेलो एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल मस्ती की एक वीडियो की जिसका टाइटल है एस जयशंकर सिग्मा रूल। तो जयशंकर साहब की हमने एक वीडियो देखा था जिसमें वो आईटी एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो। आईटी एक्सपोर्ट हैं तो वो फिर वीडियो देख के हमें बड़ी हंसी भी आई थी कि यार देखो कैसे सरकेस्टिकली जो है ना किया गया है चीज़ों को हैंडल। बहरहाल हम आज की वीडियो पे आते हैं, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी आपकी बातें हैं वो अभी लिख दो या वीडियो के एंड में लिख। स्टार्ट करते हैं जी। 3 2 1 एंड गो। हेलो दोस्तों, आज हम हेलो। बात करेंगे एक ऐसे डिप्लोमेट के बारे में जिसको सिर्फ फ्रंट फुट पे खेलना पसंद है, और जो फ्रंट फुट पे खेलता है वो पेलता भी बहुत गंदा है। चाहे वो कोई नेता हो या कोई बड़ा रिपोर्टर, और चाहे वो अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाला देश भी क्यों ना हो, ये सबको उनकी औकात जरूर दिखा देते हैं। मेरा आज है। हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में। इनको आप अभी तक का इंडियन हिस्ट्री का बेस्ट विदेश मंत्री भी बोल सकते हो। अगर एस जयशंकर सर आने वाले 15 साल तक इंडिया के विदेश मंत्री रहे तो आप देखेंगे कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी नाक रगड़ते हुए इंडिया के सामने सिर झुकाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इनकी बातों से यही लग रहा है कि बंदा बहुत तगड़ा वीडियो है। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को इंग्लिश कम समझ में आती है तो उसके लिए मैंने हिंदी में सबटाइटल बनाया है। हिंदी सबटाइटल पढ़कर आप वीडियो का मजा ले सकते हो। When it comes to सही है भाई, Kashmir, लेकिन हमें हिंदी पढ़ने नहीं आती, I don't know how it ends, इसलिए हम इंग्लिश भी गुजारा but करेंगे। let's make sure that two democracies will end it differently. And if you can prove that concept here, then I think it's probably the best way to sell democracy. Don't worry, Senator. One democracy will settle it. And you know which one. एस जयशंकर सर से पूछा गया कि दो लोकतांत्रिक देश मिलकर कश्मीर के मसले को कैसे सुलझाएंगे, इसका कोई लोकतांत्रिक उदाहरण दे दीजिए। दो लोकतांत्रिक देश का मतलब एक तो इंडिया हो गया और दूसरा पाकिस्तान, और इनको लेकिन लगता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कहाँ देश से है? एस जयशंकर सर ने जवाब दिया है कि आपको पता है वो कौन सा लोकतांत्रिक देश है जो ये समस्या को सुलझा लेगा। वैसे भी हमारे मोटा भाई ने कश्मीर के बारे में बोल रखा है। जान दे देंगे इसके लिए। Regard to India and Russia, we have really a long-standing relationship with Russia, a relationship that has certainly served our interests well. And when you asked about the military equipment issue, we have, as you know, a substantial inventory of Soviet and Russian origin weapons. And that inventory actually grew for a variety of reasons. You know, the merits of the weapon systems themselves, but also because for multiple decades, Western countries did not supply weapons to India, and in fact saw a military dictatorship next to us as the preferred partner. So I think we all in international politics deal with what we have. We make judgments According to the which scenarios and time. are reflective of both our future interests as well as our current situation. My sense is, in terms of this current conflict, like every military conflict, there are learnings from it, and I'm sure my very professional colleagues in the military would be studying it very carefully. एस जयशंकर सर से ये सवाल हजारों बार पूछा गया कि आप रशिया पर क्यों निर्भर हो, क्यों आप रशिया का साथ देते हो। सर ने इस बार फाइनल जवाब अभी तो दे बताया। दिया। जब हमें मदद चाहिए थी तब आप लोग पाकिस्तान के पीछे भाग रहे थे। उस टाइम हमारा साथ दिया था रशिया। रशिया हमारा पुराना साथी है और रहेगा। सर ने खुलकर ऐसा तो नहीं बोला था, बट सर का मतलब यही था। I काइंड know ऑफ the तो यही Indian-Russian था। relationship is strong, but you also have issues with China. How do you then sit back and define Indian foreign policy at this point where the West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is जर्मनी भी तो ले रहे हैं। It's only Indian money बहुत सारे and countries ले रहे oil हैं। coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds. I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here.
And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. And it was a very low base because at that time the markets were more open. Why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and guess the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. लेकिन to be honest, सर क्या बोलना चाह नेशनल रहे इंटरेस्ट थे मैं पहले आपको होता एक है। लाइन में समझा देता हूँ। सर कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने हिसाब से किसी पर भी प्रतिबंध लगा देते हो, फिर दूसरे देशों को भी बोलते हो कि हमारी बात मानो। ऐसे कैसे चलेगा बाबू? Our PhD student Shubham has said that we need to buy oil from Gulf as India. We are dependent on Russia for weapons, and our largest community is in the USA, and they're fighting among themselves. How do you deal with that? Right? How do you, as a diplomat, deal with that? The clarity of that analysis is astounding. I'd like to recruit that person in the foreign ministry. But joking apart, look, that is what our business is, which is, in a way, you have multiple interests, multiple sources, often contradictory, sometimes conflicting. And how do you actually manage different accounts and different relationships with the best possible outcome? I mean, that is the essence of what diplomacy is. Diplomacy and is since it was सही put बात so sharply and graphically, I can say it is not always very easy. You have a problem with China on the border. It's been going on for decades now. It is getting worse. Sorry, do you mind if I interrupt No, you here? please do. But I want to come back to a question, the crux of the question, which I asked a few people in the political circles, in the financial circles. What's your big question? Body language से And one of दिख the रहा है foremost कि ये geopolitical होने strategists वाला on है Wall इस Street sent me this reporter। question for you. And the question is simple. If and when the choice comes down to it, not today, not tomorrow, but in the future, and she strongly believes it will, for India, will it become, in terms of support, the US or China? And that will be kind of a defining moment that comes out of the situation that we face with Russia right now. Look, number one, why I wanted to interrupt you in a way. I mean, I'm partly reacting to the previous observation. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. There will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this? But are you planning to not pick a side? No, I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit. Everybody knows that. I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. And my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. मैडम एस जयशंकर सर को ज्ञान दे रही थी। आज आप रशिया को गलत नहीं ठहरा रहे हो, रशिया से पेट्रोल परचेज कर रहे हो और आप हमारे साथ भी खड़े नहीं हो रहे हो। अगर कभी पाकिस्तान और चाइना के साथ आपका युद्ध स्टार्ट हुआ, फिर आप हमें उम्मीद की नजरों से देखोगे। उस टाइम हमने आपका साथ नहीं दिया तो आपको कैसा लगेगा? डॉक्टर एस जयशंकर सर ने जवाब दिया, हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देख लो। मैं आपको एकदम देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। बाकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सवाल बहुत नाप तोल के बोला जाता है ताकि किसी देश को बुरा न लगे, और उसका जवाब भी बहुत सरल होता है, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े होते हैं।
ओके, तो एवरीवन हमने वीडियो देखा और इसमें एक बात तो मैं कहूँगा कि ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े ही एक काम एटीट्यूड के साथ चीज़ों को देखते हैं, प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर जो है ना एक ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला हो जाए स्पीचलेस। ज़्यादातर इसमें पार्ट जो था वो रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट पे था, लेकिन बात यह है कि जनाब पूरी दुनिया ये कहती है कि ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के यूनाइटेड स्टेट या नाटो का जिसके साथ कोई मसला हो जाए तो वो ये कहते हैं कि भाई इस पे फाइनेंशियल बैन लगा दो, क्योंकि इसके विक्टिम पाकिस्तान भी रहा है, इंडिया भी रहा है, अफ़गानिस्तान रहा है, ईरान करंटली है, नॉर्थ कोरिया है। मतलब आपकी अगर किसी के साथ नहीं बनी हुई तो आप उस पर सैंक्शन इम्पोज कर देते हो और पूरी दुनिया को कह देते हो ना इसके साथ कारोबार करना है, ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, कुछ नहीं करना। और अब एक आपका ऐसे कंट्री के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ है जो कि काइंड ऑफ आपके इक्विवेलेंट है पावर में, यानी रशिया के साथ। तो अब क्योंकि आप उसको डायरेक्टली टैकल नहीं कर पा रहे तो आप पूरी दुनिया से कह रहे हो कि भाई बायकॉट करो, ये ना करो, वो ना करो। तो भाई अपने मसले खुद संभालो ना। हर दूसरी कंट्री के साथ टाइज़ हैं और वो टाइज़ जो हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में देखी जाती है। तो जयशंकर साहब ने बड़े तरीके से यही बात बोली है कि आप अपना देखो यार, आपका प्रॉब्लम आप संभालो ना। हमसे उम्मीद क्यों लगा रहे हो कि आपकी लड़ाई हुई है तो हम भी जाके जो है ना आपकी साइड लें? ऐसा नहीं होगा। आपकी लड़ाई हुई है, आपका उनके साथ मैटर है, आप खुद देख लो। जब कभी हमारे पे बात आएगी हम तब देखेंगे। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच है कि अपने मसले खुद संभालो ना यार। वर्ल्ड से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि हर दफ़ा ही अमेरिका ही सही होगा या यूरोप ही सही होगा? कोई और भी तो सही हो सकता है। ये यूक्रेन हो गया, ये सारी कंट्रीज़ कैसे बनी थी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब जिस कंट्री में से टूट के बनी है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा क्लेम ही करेगा कि भाई ये मेरे पार्ट थे एक टाइम में। उसको जो मर्ज़ी नाम दे दो, सोवियत यूनियन कह दो, जो भी कह दो, था तो इन एक्चुअल वो रशिया ही था। तो सही है भाई, बंदा बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत क्विक है, इंटेलिजेंट है और बड़े अच्छे तरीके से जवाब देता है। तो डेट्स वाई सिग्मा रूल तो हैं भाई बहुत सारे। तो बहरहाल हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।